Hello, everybody. I am Shaumita Mukherjee and the co-host of this session along with Raj Nandini. The topic we are going to discuss today is about immigration laws in the United States. Everybody knows that it's a very vital topic. Roughly around 1,80,000 students goes to America to study various courses and subsequently extend their stay by securing their H1B work visas after their course. Undoubtedly, US citizenship is most sought after, and let me tell you, the one person you need the most regarding this process is an immigrant attorney. Today, we have with us our guest speaker, Advocate Mr. Mohit Paul, enrolled with Delhi Bar Council, founder of Aegis Remedium, which is based in Delhi. He is an international counsel and an aspiring attorney for the state of New York. Mr. Paul will now enlighten us with his views on the immigration law for the United States of America. We would also conclude with covering a few topics about the Indian Constitution and how it regulates the immigration laws of our country. Thank you. Mohit, I hand over it to you now. Thank you so much, Swamita. And good evening, everyone. And good morning to all who watch this video in the US. And क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग इंडिया से भी हैं, तो इसी वजह से I will keep changing my language from English to Hindi so that we all are on the same page. तो immigration laws काफी important हैं, especially when it comes to Indians. क्योंकि India is the third largest source of immigrants when it comes to immigration laws in the United States of America. The first is Mexico, the second is China, and the third comes the India. तो जब क्योंकि हमारी इतनी मेजॉरिटी है यहाँ पर में पॉपुलेशन की यूएस में, तो क्योंकि either you can be a citizen by birth or else you take your citizenship by a very lengthy process, and which is not a very easy process. It is a very complex process. However, they've made it very easy. You can just easily go to their website, which is USCIS, and you can apply for your immigration petition. But there are certain conditions when you can apply, and it is not a very easy task if you do not have any of your relatives in the United States of America. If you have your wife filing a petition for you, or else a husband filing a petition for you, and you are an Indian citizen, it becomes very easy. Or else, if you are a son or daughter unmarried to a US citizen and have not attained the age of 21, then you do not have to worry. There's no wait time. You just apply for it. However, still the process is a lengthy one. You still take approximately an year, and it can vary in every cases because there are different things which you have to comply with, be it a medical test so that you do not carry some communicable disease, and then it is a whole lot of process with which you have to comply. And when it comes to Indian Constitution, तो देखिए हमारे मोस्टली जितने भी कंट्री के प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैं, जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, लॉयर्स हैं, मोस्टली हैव गॉट देयर एजुकेशन फ्रॉम यूएस. So whatever they learn and good things about US Constitution, जो भी अच्छी चीजें होती हैं, वो सारी यहाँ से सीख करके जा करके इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं when they are at such positions, judges या वरना officer of the court, which is lawyers.
तो अगर हम यूएस से आकर के अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करते हैं, बैचलर्स तो इतना नहीं इजी हो पाता है, बिकॉज ए इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, बी यू डू नॉट गेट admission very easily. If you look for opportunities in masters, which is LLM, so it gets a very easy. B, you also get scholarship basis the diversity, because हम different countries से हैं, and US is one country which really respects diversity, and वो diversity के basis पे आपको scholarship देंगे. सो इसी वजह से आप ये सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. आई मीन ये हमने अक्सर सुना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूके से, इंग्लैंड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बट आई से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है. एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, सो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके राइट्स हैं, जो वही सेम राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. आई मीन देयर कैन बी टाइम्स कि मतलब जो हम अपने आर्टिकल नंबर्स भी यूज करते हैं, दे कैन ऑल्सो बी सेम. सो हाउएवर हम उनको आर्टिकल बोलते हैं, वो उनको फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट बोलते हैं, because there was an amendment. So as we all know, US is a developed nation. We are a developing nation. So we learn a lot from other developed nations, so that we make our nation a great nation. And when it comes to US, so US, I consider US as a land of immigrants, because majority of the population is immigrants, and immigration is such a law which involves a lot of political activity around it. I mean, क्योंकि देखिए मेजोरिटी है इमिग्रेंट्स की, तो अब क्योंकि वो फिर वोट भी सबसे ज्यादा काउंट कर सकते हैं, सो इट इज ऑल वेरी पॉलिटिकल. तो इसी वजह से पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. एंड कोर्ट का, I mean, court can intervene in, you know if somebody is brought into deportation process, तो वहां पर में कोर्ट का रूल आता है, और दूसरी जगहों पे में भी कोर्ट का रूल आता है. बट देन व्हेन इफ वी लुक एट वेरी इनिशियल स्टेज, और या वरना हम इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें, तो कोर्ट्स का इतना इनिशियल रोल नहीं है. इट इज मोर ऑफ लाइक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड यूएससीआईएस, जिसके साथ आप मेजरली काम कर रहे होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है. जैसे हमारे कंट्री में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, या होम मिनिस्ट्री है, जिनके पास पावर्स है या तो किसी को वीजा देने की, या वरना किसी को अगर वीजा एक्सटेंड करना है. आई रिमेम्बर दिस केस, वी वर वर्किंग एट Delhi High Court, जहाँ पर में एक क्रिकेटर थे from a different country, and he had to come to our country to play cricket. So since we are from India, we never thought about it कि भाई कोई इंडिया के लिए भी वीजा लेता होगा, know, या वरना asylum seek करता होगा. However, with this very recent NRC, so हमें पता लगा कि लोग काफी दूसरी कंट्री से भी आते हैं, एंड हमारे कंट्री में भी इमिग्रेंट्स हैं, और या जो कि ऐसी हमसे भी ज्यादा पुअर कंट्रीज हैं, जहां पर में कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. सो ईदर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ईदर फॉर अ बेटर लाइफ, ईदर टू सेव themselves from the persecution, like the persecution basis on religion. तो इसकी वजह से भी लोग हमारी कंट्री में आते हैं. सो ऐसी सिमिलरली यूएस है. यूएस थोड़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो इसी वजह से इंडियंस काफी ज्यादा यूएस की तरफ जाना चाहते हैं. एंड हाउएवर अच्छा भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. एंड व्हेनेवर यू नो I will share my email address in the comments, or else somebody from my office must do, because they might have also joined this. And just in any case, if you need any help, we are all there for you. And if you need any help, Thank you so much, Mohit. Uh, so
like whosoever goes to the US uh, definitely wants to get their H1B first, and then they dream for their green cards. So our question to you is, what is an H1B working visa, and who is eligible to take it? I would say eligibility is something which can be very complex. So it can be Hmm. very based on individual cases. However, generally, if you ask me, तो देखिए H1B वीजा वर्क वीजा होता है अगर किसी को यहाँ पर में एम्प्लॉयमेंट करना है ए एज पर इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट विच रेगुलेट्स द होल इमिग्रेशन लॉ इन यूएस as per that whosoever is a citizen of India is whosoever is a citizen of United States of America is a citizen, and anybody else apart from that is an alien for them in immigration and nationality law. So yes, it can sound a little different, but then all of us are alien for US as far as we talk about Immigration and Nationality Act. So if somebody has to work, an alien has to work in US, so they will have to take this work authorization. Similarly, if some immigrant coming to India, if he or she wants to work in India, so they have to take work authorization. So they call this as an employment visa. H1B visa is an employment visa. If you wish to work here, so you will have to take this visa. It is not very easy for lawyers to take this visa because usually people coming from the background of STEM degree. STEM degree is science, technology, engineering, mathematics, because US needs more people from four of these backgrounds. So it is very easy those who have STEM degree to get this kind of visa. However, for we lawyers and for different professions, it might get a little difficult. However, I would still say it is not very difficult. You can still go ahead and try it. And then I have myself seen that many of them have got this kind of visa, but हाँ लेकिन आसान नहीं होता है. And if you ask in a very generalized way, so it is merely an employment visa जिसके बाद आपको authorization मिल जाता है काम करने का यूएस में. उसके बाद आप लीगली यूएस में काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर टूरिस्ट वीजा पे हैं, विजिट वीजा पे हैं, तो आप उसमें कोई रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप कोई स्टूडेंट एक्टिविटी में पार्ट नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. इट इज जस्ट दैट कि आप यहाँ पर यूएस में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, या वरना आपको जनरली विजिट करना है एंड यू विल हैव टू गो बैक. And now if we talk if you ask me about eligibility, so I would say anyone is eligible to apply for it. However, it is the discretion of Homeland Security whether to approve it or not. And Yeah, mostly इतना आसान नहीं we होता है approve basically would करना. need a bachelor's or an equivalent degree to be the least eligible. Like that's the least eligibility criteria for a H1B, I guess. I mean, yes, correct. And then I don't think anybody, having an education less than this would even consider this. And I Yeah, mean, that's there true. can be other requirements as well. Like, I mean, you will have to write an IELTS exam, a TOEFL exam, and there can be thousands and Mhm. thousands of compliance which you will have to do. Yeah, totally got. So Um, over here. we have, yeah. Yeah. Nandini, you So would I like have to a take over? question Yeah. over here. There, yeah, I just want to ask a question that there are a lot of reasons, retrogression and green card blockings, due to which a lot of people working in US for over a decade do not get the citizenship. So what alternatives or options do these people have? Okay, so once when it comes to citizenship, it is very complex if you do not have a relative here, as I have mentioned in the past. अगर आपके पास कोई यहाँ पर में रिलेटिव है, तब तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है. बट देन अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा है,
एंड अगर आप उसको शिफ्ट कराना है इनटू ग्रीन कार्ड, so there is a whole lot of process with which you will have to go through. You will have to apply under different categories so as to get a green card, and which is not a cakewalk, which means कि आसान नहीं रहता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. However, there are ways, and since it can be, based on which country you come from, and then which employment are you in, and then under which category are you applying. So I would still say I'm giving a very bird's eye view. I wouldn't comment on this, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, बिकॉज सबकी स्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है, एंड आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट फॉर नाउ. So I would Mhm. recommend get in touch with some good immigration attorney, and he or she will be able to give you um, you know a more detailed version of this, कि भाई आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आपको किस कैटेगरी के अंडर में अप्लाई करना चाहिए. एंड yes, but then if I talk about, there should be no criminal record in your home country as well. They do ref checks, and you know the conditions, and then उनको बहुत ज्यादा ऐसी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए दैट यू कैन बिकम अ लाइबिलिटी फॉर यूएस गवर्नमेंट इन फ्यूचर. तो अगर उनको ये थोड़ी सी भी फीलिंग आएगी तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उनके लिए कोई भी सिटीजन लाइबिलिटी बने. हम इंडिया के लिए भी नहीं चाहेंगे कि somebody coming in from for example say बांग्लादेश, एंड वो यहीं पर हमारे कंट्री में ही रुक जाएं, और फिर उसके बाद किसी स्कीम्स के अंडर बेनिफिट्स लेना शुरू कर दें, एंड गवर्नमेंट के लिए एक एक्सपेंडिचर बन जाए, और हमारी इकोनॉमी में कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करे. हाउएवर, यूएस इज सच ए country, those who want people basis diversity, which is why they have this lottery system, wherein people coming from different nations can apply. So even people can apply under this category as well. However, when it comes to Indians, I mean, for we Indians, because as it is हम नंबर में इतने ज्यादा हैं, तो हमारे को यूजुअली इतना इजीली नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नंबर में इतना है. समबडी कमिंग फ्रॉम सम स्मॉल कंट्री फ्रॉम अफ्रीका, तो वहां से मे बी उनको मिलना इजी हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए नहीं. एंड इफ यू टॉक अबाउट बैकलॉग्स एंड क्यों इतना डिले होता है, सो आई थिंक द होल रैशनल बिहाइंड दिस इज कि वो एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, कि पहले जो लोग आए थे, they might die, or else they might retire, or else they might go back to their country. So and then so next year वो under this category एक fixed number को you know कंट्री में सिटीजनशिप देना चाहते हैं, या वरना ग्रीन कार्ड इशू करना चाहते हैं. सो एवरी ईयर दे कम अप विथ अ नंबर, एंड विच इज मोस्टली द सेम. तो वो नंबर फिक्स रहता है कि वो इस ईयर में कोई भी इस कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है. सो दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने ये डिसाइड करा है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने, यूएससीआईएस ने, एंड देयर आर अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स which work and decide that what will be the maximum number. अगर उन्होंने ये डिसाइड करा है कि जो एम्प्लॉयर है यहाँ पर में, एंड अगर 10 इयर्स से काम कर रहा है, और अगर उन्होंने अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा है, तो हम ऐसे केस में 100 लोगों को ग्रीन कार्ड देंगे. अब अगर 120 लोगों ने अप्लाई करा है, तो उसमें से 100 ही लोगों को मिलेगा. एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज लकी बैचेस की जिसमें अप्लाई ही या तो 90 नहीं कराया, तो 100 नहीं कराया, सबको मिल जाएगा. सो इट इज वेरी बेस्ड ऑन द नंबर्स, कि भाई कितने लोग आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू इंडियंस अप्लाइंग टू यूएस फॉर द ग्रीन कार्ड, नंबर काफी ज्यादा होता है, 100 इज नथिंग. सो या बैकलॉग इस वजह We से ही है क्योंकि इतने ढेर सारे लोग.
we can just take up this question which Urvashi Sharma is posting, I guess, that what are the eligibility criteria to study LLM in the USA? So Mohit, I would definitely like you to answer this. You can enlighten them with the Right. LSAC process So also. every right. So yeah, if you want, you can write an exam which is LSAT. So you can, which is a qualifying exam which you give just like CAT. जैसे आप CAT का exam देते हैं, so as to get an admission in MBA. इंडिया के लिए होता है वो। तो आप एलसेट का अगर एग्जाम देते हैं विच इज लॉ बेस्ड एग्जाम, आप वो एक बार लिखते हैं, उसमें आपका जो भी स्कोर आता है यू गो विद दैट स्कोर टू डिफरेंट यूएस लॉ स्कूल्स एंड देन यू टेल देम कि okay, this is what my score is and this is the kind of CGPA I scored in my bachelor's in law, and you can apply to different law schools. I would say so. Most of the law schools, and then if we talk about LLM, they take admissions for the fall session every year, and the fall session starts in August. They do take in spring session as well, but then it is in very unprecedented conditions, which were like this. A pandemic happened, so mostly they go by this fall session, which is every year in August. So if you want to apply, for the session in 2022 now, and if you're graduating anytime soon, I would highly recommend you start applying for it. Go to the Google, type in I the I might say 100 top law schools of US, and then start reaching out to them and ask them if they have any admission openings, and then they will apprise you of all the requirements there. So I will highly recommend you writing an email to these law schools. I mean, we can also talk about topmost law schools which are Ivy League law schools, which are Ivy League colleges. You can also apply there. There are other colleges as well, and then the college where Somita will be soon going to study her LLM, which is Penn State. So they also give you scholarship basis the diversity, since you'll be from India or Wushi. So there can be other law schools as well. तो आप सभी law schools में apply कर सकते हैं. All right. So when it comes to eligibility criteria, so वही हर school के अपने खुद के eligibility criteria हो सकते हैं. However, it is not very difficult to not think. I mean, sadly, most of the students think कि, you know, we're a kind of average student. We won't be able to make it, or else for students even who score well, think that we US is a very big deal. We won't be able to go there, but ऐसा नहीं है. आप apply करिए, and then yeah. certainly you will get an admission, and it is not very expensive because you get scholarships basis the diversity quota. तो क्योंकि उनको अपनी कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी चाहिए, तो इसी वजह से ये सारे लॉ स्कूल्स यूएस की यूनिवर्सिटीज यू नो प्रमोट करते हैं कि अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री से हैं तो यहाँ पर आइए. एंड however I am here for a legal assignment, but I've seen a lot of law students here in the United States of America when I meet them here in different courts. A B people welcome you, with warm heart here in US. I mean, you wouldn't have this feeling ki, where are you? I mean, why do I face any discrimination because I'm from a different country? They do not do that. So I would say yes, a basic requirement that you might will have to write IELTS exam, which is an exam just to test your level of English. कितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. And you might some law school might require IELTS, some law school might not, and some might also waive it off if you have gone to a law school in India जहां पर में मीडियम ऑफ टीचिंग वाज इंग्लिश, तो इसी वजह से कुछ उसको वेव ऑफ भी कर देते हैं. You can also um, you know approach these law school without LSAT score.
तो ऐसा नहीं है कि आपको एलसेट स्कोर ही देना होगा, बिकॉज आई नो अ फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने एलसेट दिया था, एंड विच इज अ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम, एंड ऑन द अदर हैंड उनको एडमिशन मिल गया था, एंड ऑन द अदर हैंड आई नो बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने एलसेट नहीं दिया था एंड फिर भी उनको एडमिशन मिल गया था। आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने आइल्स का एग्जाम दिया था तभी उनको एडमिशन मिला। आई नो अ हैंडफुल ऑफ पीपल जिनको नहीं देना पड़ा था, उन्होंने बस ये प्रूव कर दिया कि हमारे कॉलेज में मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश था, तो इसी वजह से ही उनको एडमिशन इजीली मिल गया था। ऑलराइट, सो हियर्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। वंस व्हेन यू अप्लाई, आपका एक इंटरव्यू होता है यूजुअली, बहुत ही बेसिक रहता है, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो बेसिक आपसे लीगल नॉलेज आपकी चेक करेंगे, एंड चेक करेंगे हाउ गुड what good will you bring to the college, to that university. Alright, so वो ये इस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं ये यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज। And then you get in the process, you apply for it, then you get your I-20. I-20 is a document which every student gets, and when you apply for your admission, once when your admission is confirmed, you get an I-20 document which will say that yes, this university has given you admission, and they want you to travel to the United States of America, and you can apply for your student visa. So the students usually get an F1 visa. If I talk especially about LLM students, and then for all the students, you get F1 visa. And if you apply for LLM, every college might have different rules and regulation. But then apart from your studies, you can also work part time on campus for 20 hours. And then when we have breaks, so you can work up to 40 hours if needed. But then जब classes आपकी हो रही होंगी, then you can only work for 20 hours. And then it is a very easy process. आपको schools help करते हैं, and then certainly yes, अगर आप में से किसी को भी अगर ऐसी किसी opportunity को pursue करना है, so you can contact Samita, because उनको already admission मिल चुका है। आप मेरे को contact कर सकते हैं, मैं help कर सकता हूँ with a whole lot of process, and then I know some good universities की जहाँ पर मैं आप apply कर सकते हैं। So Mohit, we have this question from Sanket Mandal who asked that an LLM in the US, how is it going to help a student who wants to come back to India? So please enlighten that. Right. Right. I mean, there can be very good opportunities after, once when you finish your LLM. See, you know, everybody will look up to you since you have got education from, one of the best country. B, it looks very good on your resume. C, any good law firm in India would hire you undoubtedly because you have finished your education from US. D, I would say that whatever judgments are being, because I keep reading about, US Supreme Court judgments and then Supreme Court judgments of India. So whatever judgments the US Supreme Court passes today will, kind of be an inspiration for Indian Supreme Court judgment in the near future. For example, if they're talking about something related to internet, they pass any judgment today in the US in relation to internet 5G, we can see a similar judgment in India in few of the coming years. So, and most of the judges, most of the lawyers have studied from the United States of America, especially when I talk about masters in law, which is LLM. So it will give you a very good impact. Plus, you will get to learn about US laws, about US Constitution, which is somewhat similar to India. And once when you start practicing in Supreme Court, so you do not just limit your judgments to Indian courts. If there is a case wherein a Supreme Court had passed a judgment in a similar with a similar facts of cases, so आप यूएस की भी जजमेंट
को रेफर कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, because and there have been cases, I mean, I I've used it myself in the Supreme Court of India, कि जहां पर में कि और क्योंकि हम लोग India is also a common law system country, and US also has a common law system which is एक बार एक सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है for the you know Got it. Yeah. Hmm. subordinate courts, so which is high court, and then even for the supreme court itself, like in future, this judgment will always be referred if a similar case is heard by the supreme court. District courts के लिए वो एक precedent बन जाता है, which is kind of a law. तो ऐसा ही यूएस में सिस्टम है. हाउएवर Mhm. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूएस जो कि कॉमन लॉ सिस्टम पे काम नहीं करती हैं, तो इसी वजह से तो यूएस एंड इंडिया की लॉज बहुत से सिमिलर है, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, एंड यू विल बी वन स्टेप अहेड to if somebody studies LLM from India, and if somebody is willing to come to US for their LLM, and it will be, And trust me on this, very helpful. It will be a so learning Mohit, experience for you. Mohit, we have been seeing that So now, yeah. the Trump administration was not really good with the immigration and the immigrants, and they were not really for the H1B. They had restricted the cap, etc. So, and Biden, on the other hand, has declared that he is going to struck this down, and it has already begun. So, how do you think, like the new administration bill, sorry, the immigration bill that has been, brought in by the Biden administration, how is it going to help the immigrants? How is it going to help the work visa holders? And how is it overall going to help everybody who wants to immigrate to US? See, certainly the new government, will make such laws, will make the whole, process for Indians very conducive, because the vice president comes from India, which is Kamala Harris. And so, yes, certainly under the current government, it will become very easy. However, what the previous president was doing, President Donald Trump, I mean, his way of looking at this was that हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है. सिमिलरली जैसे हमारी कंट्री में करंट गवर्नमेंट ने अभी एनआरसी को लागू करा. दे डू नॉट वांट a specific set of people to not come into India and then settle here, and then they want to extend a helping hand to a specific religion, कि जैसे कि अगर उनको कोई ऐसी एक्सपीरियंस हो रहा है परसिक्यूशन अपनी कंट्री में, सो एज टू फॉलो देयर रिलीजन, तो हम उनको बुला लेते हैं अपनी कंट्री में. हम इस न्यू एक्ट के थ्रू हम उनको एक तरीका दे देते हैं इंडिया में एंटर होने का एंड इंडिया में रहने का. सो यस, सर्टेनली हैविंग सेड दैट, things will get very easy under this new US government, which is led by Mr. Joe Biden, and the vice president Kamala Harris. It will be very easy, and then they have been making such rules and have been making the whole process conducive for Indians. So yes, it will become more easy for us in coming future, and they have already made it very easy. They've done away with the rules and regulations which were not required and which were stringent, uh, on basis of the community which come from, on basis of the country which you come from. So Mr. Trump, as a president, he was more of like ourselves, like US itself. Like he did not want other people more to come into India. However, Biden administration thinks that diversity will become a good name to the US, and would bring a lot of uh, opportunities of strengthening the economy. And I would say that अगर आप as LLM student अगर आप देखें, मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ, you only said in the starting, apart from LLM students, कितने students यहाँ पर वे आते हैं.
and they end up telling their parents कि भाई आप हमें कुछ पैसा ट्रांसफर करिए for so as to meet the expenses, so as to manage their housing and everything, and paying the tuition fees. तो हम वहां पर भी क्या कर रहे हैं, हम यूएस की तो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बिकॉज फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेरिका में आ रहा है, एंड यहाँ पर में हम उसको यूज कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम यूएस की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. सो इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि वो हमारे को एज एन एनिमी देखते हैं, इट इज दैट वो एक कंट्रोल रखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि दूसरे ही कंट्री के ज्यादा लोग आ जाए एंड हमारे अपने ही लोग यहाँ पर में काफी नहीं हो. So which is what I think that they want to maintain a balance. And yes, certainly having said that, uh, US में अभी जो currently गवर्नमेंट है उनके साथ हमारे लिए चीजें काफी इजी रहेंगी. प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी मुश्किल थी, इम्पॉसिबल फिर भी नहीं थी, एंड वो they were prioritizing their country, their people more. And we are like, in the current government we are like, okay, we respect everybody, we should have diversity, and they want new people to come into their country, and they want to make US a nation where everybody come can come in and live here. So, whenever we talk about US immigration laws, the one issue that is always raised is border crisis. So, how do you think that impacts the laws or new amendments into that? Right. So as we know, the previous Trump government had came up with this idea that we'll end up um, making a wall across the border so as to protect our borders. However, there was a recent study I was reading about it. जितना पैसा उन्होंने उस चीज के लिए खर्च कर दिया है इस वॉल को बनाने के लिए और या अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, उससे कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिली है. एंड देन द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच दे हैव डन टू बिल्ड दिस वॉल टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स, तो वो ज्यादा है इंस्टेड ऑफ कितना वो सक्सेसफुल हो पाया है ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स, those who enter United States of America through illegal means and through borders without getting the visa or else the correct paperwork. And I mean, I also remember this very recent case which happened in India, जहां पर मैं इंडिया से खास करके एक स्टेट मेरे को पता है जहां से काफी ढेर सारे लोगों ने बहुत पैसा पे करके कुछ एजेंट्स को वो पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज गए थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेक्सिको से उन्होंने किसी रिवर से होते हुए एंड देन बहुत माइल्स चलना पड़ता है उनको, एंड तब जाकर के यूएस में एंटर करा था. एंड बट देन यहाँ पर भी एक डिपार्टमेंट है जो कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है आइस. उनका काम ही यही होता है कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ के एंड उनको डिपोर्ट करना. सो उनको ये ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो कि आए हैं, सो दे वर कॉट एंड दे वर सेंट बैक टू इंडिया. एंड इमेजिन, मेरे को स्टोरीज उनकी याद है, आई वाज रीडिंग इन टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत से लोगों ने तो अपने लैंड बेच दिए थे ताकि वो इतना लाखों पैसा दे पाए इन एजेंट्स को, विच इज रॉन्ग, विच आर इलीगल. एंड ऐसे करके वो यूएस पहुंचे थे, वहां पे बस अभी काम करना शुरू ही करा था, एंड दे वर कॉट एंड दे वर डिपोर्टेड. सो यस, बॉर्डर क्राइसिस की सिचुएशन बहुत ज्यादा. एंड आई हैव हर्ड अबाउट सच स्टोरीज कि लोग मेक्सिको की तरफ से दूसरी तरफ से एंटर होते हैं, अपने मुंह पे पॉलिथीन बांध के पानी में कूद जाते हैं ताकि कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं यूएस की, उनको ऐसा लगे कि ऐसा कोई पॉलिथीन फ्लोट हो रही है बट देन उसके अंदर एक आदमी होता है. सो आई मीन पीपल हैव बीन डूइंग सच फनी थिंग्स, रिस्किंग देयर लाइफ, व्हिच आई डू नॉट रेकमेंड. एंड जब उन्होंने इतने अच्छे रूल्स बना रखे हैं यूएस गवर्नमेंट ने, आप उसके थ्रू अप्लाई करिए एंड आप लीगली आइए यहाँ पर, में लीगली काम करिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, एंड देन पे देयर टैक्सेस. एंड उनको भी चाहिए कि लोग दूसरी कंट्री से आए, और क्योंकि वी एंड अप स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी ऑफ यूएस. So, one of the viewers here would like to know about the impact of Eagle Act 2021.
How will it be a game changer for Indians? I mean, yes. So because it has been passed by the Trump administration, so it certainly will be helpful. And then how it will be helpful is a very broader question. It will certainly depend upon क्या आपकी conditions हैं, किस जगह से आप आते हैं, and कौन सा claim आप इसमें कर रहे हैं under this act. So ये सारी चीजें बहुत ही पर्सनल हो जाती हैं, एंड लुकिंग एट योर कंडीशन, योर फाइनेंशियल, एंड I mean there are thousands of things which you need to consider in order to comment on this. So but then yes, this certainly will be very helpful for Indians. And I would say uh, Trump administration was not at all very flexible when it came down to rules and regulations. I mean, if you've done something wrong, it is a wrong, and then you'll be deported. And then when it comes to this new U.S. government, which is Biden government, so they're a little flexible, I would say, and then they take a little humanitarian ground approach towards anything when it comes to law, implementation of law. So we'll quickly move back to the immigration laws in India. So we would just like you to put some light on what are the basic rules and regulations for the immigration in India, and when do the foreigners need a registration when they are visiting India? Right. So, uh, yes, though we do not get a lot of people applying for citizenship to the India, but then we get a lot of tourists because we have, one of the world's of wonder, which is Taj Mahal. And so because of that, we get a lot of tourists, and then we have other, monuments in India to which people come. And I remember people asking me, oh, we really like India here in US, and then we would want to go there and visit. They really like our culture. So yes, but then if it comes to registration of any person visiting in India, I would suggest every foreign national should get themselves registered with the local foreign desk, which we have set up in almost every district now. So you can go there and then get yourself registered, because once when you're registered, they can keep checking on you whether you're safe or not. And then in case Mhm. of any emergency, you can go ahead and check them. And then there are certain laws which say that after a certain number of time, a number of days, you will have to get yourself certainly registered. However, we do know that India इतना बड़ी country है with such huge population, तो वो काफी difficult हो जाता है management करना और इसका implementation करना. However, people do, and then illegal immigrants India में भी काफी हैं, and then we keep hearing about them. And which is why the current government had came up with this idea of this act, making giving more citizenship to such people who were persecuted just because they had some specific religious belief. And I would say um, इंडिया में इतना ज्यादा इमिग्रेशन लॉ, अब मैं थोड़ा लॉयर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, इमिग्रेशन लॉ का इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन है, फिर भी है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई हैड डन इट माई सेल्फ, जहाँ पर मैं वो एक क्रिकेटर थे जिनको इंडिया आना था, एंड ही वॉज डिनाइड वीजा because his coach had furnished some different details to what he actually had. एंड विच इज वाई होम मिनिस्ट्री ने उनको मना कर दिया था. सो हमारी कंट्री में होम मिनिस्ट्री इज ऑथराइज्ड टू इशू एनी वीजा, and home ministry is the one who can allow access to a foreign national into India. And then home ministry is the one who can say, oh, okay, we want this person to be deported back, or else no, we won't allow him or her to stay back in India. सो या काम थोड़ा कम है इमिग्रेशन लॉ का Mhm. इंडिया में.
बट है जरूर मतलब इट इज वन एरिया जो कि हम यूजुअली नहीं एक्सप्लोर करते हैं. हम मोस्टली या तो सिविल लिटिगेशन या क्रिमिनल लिटिगेशन की तरफ चले जाते हैं, मोस्टली डोमेस्टिक कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. बट दिस इज वन एरिया की जहां पर में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट वही कोर्ट्स का क्योंकि बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, अथॉरिटीज का ज्यादा रोल होता है, बिकॉज इमिग्रेशन इज ऑल अबाउट यू कोऑर्डिनेटिंग विद अथॉरिटीज. तो मे बी शायद उन्होंने इसी वजह से most of the lawyers do not get into all of this. And I will also Yeah. apprise you that that there is a registration which every agent has to get done when it comes to such things, that you have to give suggestions or else opinions about somebody seeking some suggestion if it comes to immigration laws. However, since we are lawyers, so we do not have to apply for such license. But then I would say most of the agents apply for such license, they get such license, and then they do more of this. However, if we lawyers want, we can also do this. Thank you so much, Mohit. It was really, really great having this talk with you, and you did enlighten us with all that you could actually. So I think we can conclude for now.